तो या दिस इज NISM सीरीज 15 बुक की केस स्टडीज है। ये इसमें क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू डू वंस देन यू गेट इजीली crack the exam and these questions too also. Okay, so inventory analysis है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या दिया होता है, इनकम स्टेटमेंट की समरी है, प्रॉफिट है, बैलेंस शीट की समरी है, कंपनी एन और बी की है 2008 9 और 8 9 की, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, uh, इसका टॉपिक है इन्वेंटरी एनालिसिस, ठीक है। कंपनी ए had a 320 lakhs worth of finished goods and WIP in its inventory at the end of the financial year 2008. Which of the following is the closest to this inventory of finished goods and WIP at the end of 2009? एक्सप्लेनेशंस अपन दिए उसके हिसाब से अपन समझते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP इन इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द 2008 is 320 which is given, ठीक है। as per the generally accepted accounting principle, expenditure incurred towards production of goods is written in inventory until the goods are disposed. Thus, in the line item, change in inventory and finished goods represent the difference between operating balance and the closing balance of the work in progress and finished goods. Closing value of finished goods and WIP is opening balance of finished goods plus change in inventory of and finished goods. So, what is the closing value of finished goods? Is 320 minus 35. It would be 285. Answer would be 285. समझ में आया क्या? इन्वेंटरी देख लेते हैं, पहले देखो। हाँ, जस्ट सेकंड। इन्वेंटरी लिखते किधर है, पता भी नहीं चलता। हाँ, इधर ही लिखा है 320 वर्थ की इन्वेंटरी है, -25। जस्ट सेकंड, -35। So yeah, you can check that minus inventory दिए -35, change in inventory जो इधर है equals to -35, the answer would be 285 lakhs. Okay, selling price trend. You have information that company in the industry increase selling price of their output. However, different companies increase their prices at different rates. Which of two companies likely to have increased their price at a higher rate and why? So yeah, a company B is likely to have increased the price more as sales grew faster than A. Second option would be company A is likely to have increased their price more. Its cost of material to sales ratio decreased year to over year, while it's remained constant over company B. Company B is likely to have increased the price more as its net profit margin increased by 23 compared to only 15% growth for company A. Company A is likely to have increased the price more as it's earned higher net profit. Answer would be company A is likely to have increased the price more as its cost of material to sales ratio decreased year over year while it remained constant for option company B, ठीक है। तो ऑप्शन बी के बारे में अपन ज्यादा देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन वन तो गलत ही है, टू में देख लेते हैं। तो कंपनी ए का क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू सेल्स रेशियो 35, 2009 में क्या था 33, और 8 9 में बी का क्या था 34। सो 34 का कांस्टेंट है इसीलिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू सेल्स रेशियो 34% कांस्टेंट है, इसीलिए उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा। 35 to 33 कम हुआ है, इसके लिए जो 2% है वो प्रॉफिट में चला जाएगा, इसका कुछ कम नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ जाएगा भी नहीं नेट प्रॉफिट। समझ में आया? एबिट मार्जिन कंपैरिजन। आंसर वुड बी कंपनी एबिट मार्जिन इज 518 bps हायर देन कंपनी बी एबिटा मार्जिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एबिटा क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। एबिट मार्जिन क्या है, एबिट मार्जिन अपॉन सेल्स। ए के लिए क्या है, 4514, ये एबिटा है। एबिटा मार्जिन क्या है 49%। बी के लिए एबिटा मार्जिन क्या है 44%। डिफरेंस क्या है 5.14, 5.18। 5.18 को बीपीएस में कैसे लिखते हैं 518? वेरी सिंपल, आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज।
आंसर आएगा फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि किसके पास डेट ज्यादा है। कंपनी बी इज अ हायर फाइनेंशियल लेवरेज एज इट्स हायर डेट एसेट डिवाइडेड बाय एसेट रेशियो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख ले, कंपनी के पास कितना है डेट टू एसेट 35, बी के पास 40, सो मोर फाइनेंशियल लेवरेज इट इज बी। आंसर इज बी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एबिटा, आंसर वुड बी 3124.8 lakhs। इसके लिए देखना है कंपनी बी के लिए एंड ईयर ऑफ द 2009। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेट। कंपनी बी का क्या है, सब प्लस कर दे, नेट प्रॉफिट भी कर दे, इंटरेस्ट भी कर दो और टैक्सेस भी कर दो। आंसर वुड बी 3124.8। व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ड्यू पॉइंट एनालिसिस, हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन हायर एक्टिविटी रेशियो। व्हाट इज आरओई ऑफ कंपनी ए, सब कुछ निकालने के बाद 90% आरओई ऑफ कंपनी बी इज इक्वल्स टू 83%। सो यस, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड asset ratio is better for company A than company B. So yeah, uh, this is very simple. You can see one or two times to get क्या हुआ, ठीक है, you can see one or two times to get the more understanding, more clearness, and just see one or two times to get clear in the exam. And yeah, if you have any queries regarding this, feel free to contact me. I'm Dhaval Visariya, signing off.